Hello, good morning. Shelly, Sharita, Sanskriti, Raghav, Mushkan, Aman, audible? Am I audible to you? Uh, आप क्लास ऑनलाइन भी ले रही है ना? Right? ठीक है. And all are regular. Yeah. Today we need to discuss money, muscles, and media. Money and muscles we had already discussed, right? What is the money power? If you look at not only in terms of campaigning, contesting election, but also right how money becomes influential in determining outcome of an election. Look at the Karorpati MP we have, right? Okay? Out of 10, 9 MP, member of parliament are basically Karorpati out of 10, right? 90% around, right? So, how does it reflect? Now we have Karorpati MP, but look at the, voter, okay, which are largely poor. 80 crore people need basically government assistance, ठीक है, for the PDS. प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि 80 करोड़ जो लोग हैं उनको हम क्या दे रहे, राशन दे रहे, है ना. Now India has also become, this is the very much pertaining questions in Indian democracy, and that is inequality. Look at India has also become third largest economy in the world, है ना. तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग बन गए. But 80 crore people are still dependent on the government PDS. 80 crore people ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है. Now what does it reflect? थोड़ा इसको बंद कर दो ना. Yes, thank you so much. It's creating problem. Yeah, thank you so much. ये चला दो. Okay. So 80 crore people are actually dependent on government PDS. Now, how does it reflect? There is a huge inequality in India, right? Money is basically concentrated in few hands, right? And on the other hand, masses are basically poor, right? As I have given you example, elite parties and voter poor example, one book has been written. And if you look at the party fund, 10 crore, party fund one party has, right? कोई बहुत सारे MNCs के पास इतने पैसे नहीं, right? Anyway, now muscles में we talked about, look at why political party prefers criminal, right, in politics, right? I had given you also example of Aam Aadmi Party. Aam Aadmi Party did not win election until it has given ticket to the criminals and secured majority. हर और ये कोई मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं. इफ यू लुक एट टीएमसी, डीएमके, कहीं से भी पार्टी पकड़ के उठा लो, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी, you will find increasing number of candidate having criminal background, right? Data we have seen in the last class, right? Now today let me talk about media, right? How media play a crucial role in Indian parliamentary democracy. Media often described as a fourth pillar of democracy, right? Fourth organ of democracy. Three organs, one namely legislature, executive and judiciary, और जो चौथा organ है उसको कहा जाता है media को, right? Third pillar भी कहा जाता है basically. But do you think that media is a pillar for democracy, especially in context of India or even around the world? Media has, it was an essential part of democracy because it raised question from the government, right? Media means representing people. Media often represented people, right? Even if you look at freedom struggle, many leaders, started editing newspaper. Gandhi edited newspaper, or even any leader, they edited newspaper.
right? To spread, masses, their ideas among the people. But what about today? Can we consider media as a friend of democracy? Then what? Is it enemy to the democracy? Then क्या है? ये enemy है democracy का? If you yes, then you have to give answer. Yes, why? It is you consider media as an enemy to democracy, parliamentary democracy. Not only India, but since you are reading Indian polity, but we should consider, our laboratory only India, right? Why India you can consider is not media is not a friend to democracy. Okay, so no friend, no enemy, right? Matlab, it has no biasness, right? But see, let me tell you, the media is a threat to democracy. It is an enemy to democracy. Now, why it is? I'm giving you an example, right? The argument. Why media has become an enemy to Indian democracy? Why it is a threatening democracy? Why it has bulldozed Indian democracy? Let me tell you. I'm use the hard word bulldoze Indian democracy because of the two. Look at how media has become alliance with corporate. The corporates are running the media. It was not the case early. Right? Even जो एनडीटीवी बची खुची जो भी थी वो उसको भी खरीद लिया. Now tell me any media which is not run by the corporate. कोई मीडिया अल्टरनेटिव मीडिया बंद बता देना कि सर वो फलाना जो है वो फेसबुक पे मीडिया चलाता है. Tell me the mainstream media. The media are basically bought by corporate, right? It's a corporate which runs media today in India. And if the corporate will run media, then do you think that corporate will run on the behalf of the people? No, never. Right? The corporate will run media in order to, maintain its dominance, right? ठीक है, उसको सरकार से जो भी चाहिए, तो सरकार की बड़ाई करनी है, तो चलो बड़ाई करो जी. Look at the media you have. Open any news channel. You see, right? I have seen, a reputed journalist. This is informal talk I'm giving you. Right? In 2022, that was a new media came up. मैं चैनल का नाम भी बता देता हूँ. नव भारत टाइम्स सुना है? नव भारत टाइम्स का नहीं सुना है? टाइम्स नाउ का ये एक हिंदी वर्जन है. उसके जो एडिटर चीफ थे, उन्होंने कहा कि 2 साल मुझे बस हिंदू मुस्लिम का डिबेट चाहिए. Why 2 years हिंदू मुस्लिम डिबेट? They wanted. उनको हाँ सरकार से डायरेक्शन मिल रहा है. लुक एट, सरकार को कहां से डायरेक्शन मिल रहा है? राइट, उसको कहीं और से भी डायरेक्शन मिल रहा है. राइट, so look at the media which we have today. Have you ever seen debate on employment or education, a healthy debate on now often debate is Ali versus Bajrang Bali, or this jihad or that jihad, this happened to that happened to this day to that day, right? Now media wants to distract you from the real issue. Now look at, we were unable to set an agenda. Who set the agenda? The media sets the agenda for us. फिर हम उसको डिस्कस करते हैं, right? Anti-Romeo squad or this jihad or that jihad, right? ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है. The agenda, we don't set the agenda for the media, and media don't set agenda for the government. The things is wise, reverse. Things is a reverse, right? Okay. So media is basically very much associated with corporate, right? That is called corporatization of media, you can call, right? Second, now if you look at media in democracy, right, what is the role of media in democracy? To discuss the social issues. अगर आप देखेंगे कि कोई भी मीडिया हो आप, राइट, वो क्या करता है? वो डिबेट करता है कि चलो वुमेन की इशू क्या है, एम्प्लॉयमेंट का इशू क्या है,
फ्रीडम का इशू क्या है, आप मीडिया देख लो, हिस्ट्री ऑफ मीडिया देख लो, राइट। वो लोगों की आवाज करता है, आवाज को रेज करता है। फार्मर्स का इशू क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है लोगों, राइट, वुमेन इश्यूज क्या क्या है, ट्राइबल्स का इशू क्या है। तो मीडिया हैज विथड्रू फ्रॉम दिस सोशल जस्टिस। अब देख लो मीडिया का जो हिस्ट्री रही है, इट्स अ ग्लोरियस हिस्ट्री मीडिया हैड, right? Media raised the issues of social issue, raised the social issue, right? The voice of the unheard, the tribals, women, workers, right? आपको लगता है न्यूज़पेपर खोलो तो जरा, it has not. हिंदी तो मीडिया it is a basically sold out. कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर उठा के देख लो, right? थोड़ा मोड़ा बचा है, वो हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, थोड़ा 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 थोड़ा, अदरवाइज कोई भी न्यूज चैनल खोल लो, same thing that you watch. So if you look at media is not a friend, it's not third pillar of democracy today we have, right? It is bold, it is demolishing democracy. It is a great threat to democracy. And it is not case of India. बोलो सर इंडिया में ऐसा केस है क्या? नहीं भाई, पूरी दुनिया में ऐसा है, right? It is a trend basically, right? Now India में ज्यादा है, right? But at the same time we have also hope. We have alternative media, right? Alternative media, several channel we have, right? Which brought or which brings basically the facts to the people, which raises question. Got the idea? So that is about media. Look at how media play a vital role. So write about media and Indian democracy. Media and democracy. वैसे को लाने गए थे क्या? भटक गई थी क्या? Write it. लिखिए. Media is often considered. Media is often considered third pillar of democracy. In the last class, we talked about money, muscles, money power, and muscles power in Indian democracy. Today, we are talking about media power in Indian democracy. Sir, Right? it's a third pillar or fourth pillar? A fourth pillar, yeah. The media is a fourth pillar of Indian democracy. Fourth pillar. Media is the fourth pillar of India's democracy, which raises question on the behalf of the people to the government. Media is the fourth pillar of India's democracy, which raises question on behalf of people to the government. On the behalf of the people to the government. Right? Next point you write, like in recent decade, media has become or media has posed threat to Indian democracy. In recent decade, media has posed threat to Indian democracy due to following reasons. Media has posed a threat to Indian democracy due to following reasons. First, it has made an alliance with corporate. It has made an alliance with corporate houses runs most of the media. नाम इसी में
corporate houses run most of media, or corporate run most of media houses. Second, media has withdrawn from the issue of social justice. Media has withdrawn from the issue of social justice. Hmm. Media. Hmm. See, corporate runs with one logic, that is a profit. Tell me other logic that corporates run their affairs, है ना? तो अगर मीडिया, हाँ हो सकता है कि मीडिया कभी ऐसा न्यूज दिखाएगा जो आपको लगेगा कि नहीं ये कॉर्पोरेट के फेवर्स में नहीं है, बट लेट मी टेल यू, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे कॉर्पोरेट के फेवर में है. Right? Look at how capitalism, exercises power over you. Even you don't know that power is exercised on you. Right? होता क्या है कि समटाइम्स हमें लगता है कि ये मेरा चॉइस है, ये मेरे राइट्स है, ये मेरी लिबर्टी है, बट ये जो चॉइस और प्रेफरेंसेस है ना, इट इज ऑल्सो शेप्ड, एंड इट्स शेप्ड बाय द कैपिटलिज्म. नहीं, look at your shoes, your specs, your dress, your everything, isn't it? Are we able to think alternative? We are not. So corporate एक ही लॉजिक पे काम करता है, प्रॉफिट पे. और वो क्यों करेगा? पहले मीडिया का कॉर्पोरेट में इतना इंटरवेंशन नहीं था. ऐसा नहीं कि मीडिया फुल्ली कॉर्पोरेट फ्री थी, नो, इट वाज नॉट, राइट, बट इतना इंटरफेरेंस नहीं था. नाउ इट वाज बेसिकली monopolization or corporates monopoly over the media. What the idea? And it will work their own for their own logic, not for the people, of course not. What the idea? That lines with my कोई रिपोर्ट, अगर आप, मैं वो कल बताऊंगा, मैं अगर रिपोर्ट चाहिए आपको, कोई फैक्ट्स चाहिए, but this is a logic that there is a corporation of media, and media actually run by the corporate, and this corporatized media will not raise the issue of the people. Let me give you the data मांगे हो देख लो. पिछले 2 साल से आप करना क्या कि मेजर जो हिंदी न्यूज पेपर है या हिंदी न्यूज चैनल है जिसको लोग देखते हैं, आप देखना कितनी बार एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन पे डिबेट हुई, और कितनी बार पाकिस्तान, कश्मीर, राम वर्सेस अली वर्सेस बजरंगबली ये हुई है. आपको पता चल जाएगा कि दिस मीडिया वांट्स टू डिस्ट्रैक्ट यू. व्हाई? Right? When media will distract your idea, then it will give opportunity to the corporate to accumulate. Look at the last 10 years how Adani had accumulated capital. आपको पता है 18 से 20 चैनल अदानी चलाता है जिसको हम देखते हैं, राइट? बाद में अगर मीडिया ये उठाने लगी इशू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई मैं अदानी का कोई दुश्मन हूं, ऐसा कुछ नहीं है. See, capitalism seems very much should be a decent capitalist which will offer a competitiveness for everyone. But India में वो capitalism काम नहीं कर रहा है. It's a very much crony. हाँ sure. It is a very much crony. ठीक है? So वो किसके पास जाता है? वो पर्टिकुलर घराने के पास जा रहा है सारे बेनिफिट. ठीक. Anyway, move ahead. क्या लिखा? Second point. Yeah, media has withdrawn from the issue of social justice and political capital. Now I have used the term political capital. Political capital मतलब होता है डेमोक्रेटिक इथोस जो होना चाहिए, राइट? एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक इथोस होता है, एक स्पिरिट होती है. डेमोक्रेसी की भी एक स्पिरिट होती है. For example, the most essential elements of democracy are basically
free and fair election, elected government, fair electoral law, है ना, independent judiciary, right, freedom of press, यही होता है ethos, ठीक है. But if you look at this, political capital has actually declined. Has media raised question about, the violation of rights that is going on? Not raising. ये जायकारा में लगा हुआ है. जायकारा बोले तो सरकार के जायकारा में. The media should stand with the people, right? Not dominant people. Of course, let me tell you, people are not homogeneous, not dominant with people, with the people who are at margin, basically. Next, you write. Okay. The media, next point, media, especially media propagates disinformation than true information. Media propagates disinformation rather than giving true information to the people. Disinformation किसको बोलते हैं? There is a misinformation, there is a disinformation. Misinformation है कि भाई आपको गलत जवाब दे दिया, गलत आंसर. वो गलत नहीं बोलेगा, कुछ सही बोलेगा, सत्य बोलेगा, कुछ आधा आपको गलत बोलेगा, ताकि आपको लगे कि 100% सही है. Right? What is the characteristics of the authoritarian regime? वो पूरा झूठ नहीं बोलता है, वो सच बोलता है, आधा सच बोलता है और आधा झूठ बोलता है. Right? Now look at media. Do you think that media gives you true information? Right? आपको पता है कि 2000 के नोट पे चिप था, मिला कभी चिप? Right? या धर्मेंद्र को पहले मार दिया गया. Look at the information. Look at the media. What media gives you information? What kind of information you get from the media? Anyway, so look at the media is basically a threat to democracy. So, money, muscles, and media and Indian democracy we have done. Now let me talk about gender profile in Indian Parliament. Gender profile in Indian Parliament. सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल भी है कि पहले एमएलए और एमपी थे, किस कास्ट से आते थे, अब किस कास्ट से आ रहे हैं. ये भी प्रोफाइल है कि एजुकेशन पहले क्या था, अब इतना आप लोग को पढ़ना नहीं, बस जेंडर प्रोफाइल पढ़ना है. जेंडर प्रोफाइल मतलब है कि वुमेन का परसेंटेज कितना है, राइट? क्या प्रोफाइलिंग रही है वुमेन की. तो आप देखेंगे कि फर्स्ट पार्लियामेंट had 5% women representation, only 5%, right? And the successive parliament has similarly थोड़ा सा बढ़ गया, कभी 4.5 तो कभी 5.5, right? It was 1991 when you see that there is a little rise, but कितना 5.5 से 7% हो गया, 2% बढ़ गया, right? Now if you look at, it was a 73rd Amendment Act, right, which has provided 33% reservation to women in the panchayat. Now, on this basis, if you look at, it was 1990s around, right, when the Women Association demanded 33% reservation for women in the parliament and the state assembly, right, on the ground that, okay, they secured 33% reservation, they should also get 33% reservation in the parliament and the state assembly, right? This was a demand raised by women association, women's movement. Now along this, if you look at, there was another movement also in India, like for example RTI के लिए भी movement चल रहे थे, right? उसके लिए आप देखेंगे कि employment के लिए भी रूल ये चल रहा था, education के लिए भी चल रहा था. आप देखेंगे कि you see, you had RTI Act, you had Right to Education Act, you had Narega, right?
right, for employment, but you had no law for, you know, women representation. Okay. Now, Parliament has introduced women reservation bill several times, but it did not pass, or it could not pass. अब आप देखेंगे कि 2010 में ऐसा होता है कि पार्लियामेंट, द राज्यसभा पास्ड women reservation bill. That was a private member bill, which I have already taught you. Right? The Rajya Sabha passed, women reservation bill, right? But Lok Sabha could not pass it. ठीक है? Now, आप देखोगे कि अभी जो 17th पार्लियामेंट है, 18th पार्लियामेंट we have today, उसमें वुमेन रिप्रेजेंटेशन कितना है? कोई आइडिया? अप्रोक्सीमेटली 14%, राइट? इससे पहले दैट वाज मच बेटर, नॉट मच बेटर, थोड़ा सा लिटिल बेटर, राइट? थोड़ा ज्यादा था नंबर में, राइट? अब देखोगे कि व्हाई इंडियन डेमोक्रेसी लैक्स वुमेन रिप्रेजेंटेशन। अगर आप देखोगे कि साउथ एशिया में कितना है, साउथ एशिया में 20% है वुमेन रिप्रेजेंटेशन। साउथ एशिया बोले तो आई थिंक साउथ एशिया, राइट, साउथ एशियन रीजन, वहां पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन 20% है। अगर आप ग्लोबल बात करोगे ना तो 32% है। ग्लोबल एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल एवरेज। व्हाट इज इंडियाज एवरेज? राइट, इंडियाज एवरेज इज अप्रोक्सीमेटली 10%। इफ यू गो टू द स्टेट असेंबली, वहां पर और बेकार हाल है। स्टेट असेंबली में मेल ज्यादा है, फीमेल कम है, ठीक है? So there was a continuous demand that there should be women, there should be law. Okay. Then if you look at 2023, right, Parliament brought up, Prime Minister called for a special session, and you had Nari Shakti Vandanam Adhiniyam, right, which reserved 33% reservation for women in the Parliament as well as in the State Assembly. But after the delimitation, right, of 2026-27 सेंसस, उसके बाद जो डिलिमिटेशन होगा उसके लिए मिलेगा, और 15 साल तक के लिए रिजर्व किया गया। ना क्वेश्चन ये है कि अगर आप फिर भी जो भी लीडर्स है इंडियन डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट में, वो भी आपको काम क्या मिलेगा? किसकी बेटी है, किसी की वाइफ है, राइट? मैक्सिमम उन्हीं के जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से आ रही है, वुमेन जो है वो वही है। इंडिपेंडेंट वुमेन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है एमएलए और एमपी का इलेक्शन जीतना। ना ये होता क्यों है? इस बीच में और भी हुआ है कुछ, जैसे कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था, पता है आपको? कांग्रेस हैज डिक्लेयर्ड कि इट विल गिव 40% टिकट टू वुमेन। बस बोला, उसने दिया नहीं। कांग्रेस ने केवल बोला, दिया नहीं। डू यू नो व्हिच पार्टी गिव्स मोस्ट टिकट टू वुमेन इन इंडिया? देयर इज वन पार्टी, उसने अपना डिसाइड किया कि भाई इतना परसेंट सीट हमें देना, और दे रहा है, दैट इज टीएमसी। आपको ज्यादातर जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगी आपको टीएमसी से मिलेंगी, राइट? और ये हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की। द वन रीजन बिहाइंड इट, दैट इज द पैट्रियार्की, राइट? Patriarchy does not only, determines our normal behavior, it also determines our political behavior, our voting behavior, right? जब हम वोटिंग करने जाते हैं ना, मैं एग्जांपल बताता हूँ। लास्ट का जो इलेक्शन हुआ है, बिहार का इलेक्शन में मेरा एनालिसिस नहीं अभी तक किया नहीं है, बट आप राजस्थान का इलेक्शन देखोगे तो जहां बीजेपी ने और कांग्रेस ने, राइट, मेल दोनों खड़े किए थे, वहां पर बीजेपी ने जीता। जहां पर बीजेपी ने मेल और कांग्रेस ने वुमेन खड़े किए, वहां पर बीजेपी नहीं जीता। जहां बीजेपी ने वुमेन और कांग्रेस ने मेल खड़े किए थे, वहां पर कांग्रेस नहीं जीता। तो विलियबिलिटी फॉर वुमेन कैंडिडेट इज अ लिटिल लेस। नाउ व्हाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की। Because of patriarchy. Patriarchy is one of the root reason behind it. ठीक है? Got the idea? जरा इसको लिखिए तो। बहुत लोग ऐसा नहीं कि इंडिया में कैपेबल वुमेन नहीं है। एक किताब है, कैपेबल वुमेन एंड इनकैपेबल स्टेट इन इंडिया।
Women are very capable, right? What is the incapable in India? That is a state, right? ठीक है, लिखिए तो जरा, देखिए, the first parliament formed in 1952. The first parliament formed in 1952, in which 5% seats were represented by women. Next point you write. Okay, the 15th parliament had 11% women MP. The 15th parliament had 11% women MPs. 16th parliament, the 16th parliament increased to 11.3%. Increased to 11.3%. The 16th हो गया ना, 11.3. 17th parliament had 14.36% women MP. And the 18th parliament had approximately 14%. And 18th parliament had approximately 14%. राइट, सो यहां जब पार्लियामेंट की बात हो रही तो लोकसभा की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा हैज ओनली 10%, राज्यसभा हैज ओनली 10% वुमेन एमपी। राज्यसभा हैज ओनली 10% women MP. The next point, the picture of a state assembly. The picture of a state assembly is also not positive about women representation. Next point you write, लिखिए, India has lowest women representation in South Asia. India has lowest women representation in South Asia. The average women representation in South Asia is 20%. The average women representation in South Asia is 20%. And the global average is 32%. And the global average is 32%. And the global average is 32%. Okay. In 1990, in 1990s, Women Association demanded 33% reservation. In the 1990s, Women Organization demanded 33% reservation for women in the Lok Sabha as well as State Assembly. In the Lok Sabha as well as State Assembly. ठीक है? The Parliament introduced Women Reservation Bill several times. The Parliament introduced Women Reservation Bill several times.
but failed to pass it. But failed to pass it. But failed to pass it. In 2010, the Rajya Sabha passed a private member bill. In 2010, the Rajya Sabha passed a private member bill which provided 33% women representation. Which provided 33% women representation. In 2023, the government introduced Nari Shakti Vandan Adhiniyam bill. Nari Shakti Vandanam Bandhan Adhiniyam. The government passed Adhiniyam and passed it. And passed it. ठीक है. अब ये सवाल है कि बहुत फेमिनिस्ट कहती है कि बहुत सारे कारण है. दे डिफाइन गवर्नमेंट एज अ रूल ऑफ मैन बाय द मैन फॉर द मैन, राइट? देयर इज अ डिफरेंट definitions. Women will get representation. Next point you write, women will get representation. Women will get representation after the delimitation in the post 2026. In the post 2026. Delimitation by the 2026 delimitation. बस 2026 delimitation उतना ही रहने दो, काफी है. समझ में आया? राइट. तो ये है वुमेन जेंडर प्रोफाइल इन इंडियन पार्लियामेंट. फाइन. इस पीछे बहुत सारी थियरी है. थियरिटिकल कोई भी स्पेक्स नहीं डालना है. ठीक है. नाउ लेट मी टॉक अबाउट, ये हो गया. लेट मी टॉक अबाउट बजट. बजट जो टर्म है ना, बजट का मतलब होता है सिंपली अ वॉलेट, अ बैग, राइट? बजट पे देखा है पहले अलग अलग कलर के बैग लाए जाते थे, अब रेड कलर, उसमें लक्ष्मी जी. बजट टर्म इज नॉट यूज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. You have Article 112, which talks about annual financial statement, right? Causes to be laid down by the President of India before both the houses in each financial year, right? और बहुत सारे प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है आर्टिकल बजट को लेकर के, राइट? आप देखेंगे कि बजट में होता क्या है. बजट में किसी भी फैमिली का बजट क्या होता है? सारा इनकम और सारा एक्सपेंडिचर का लोखा जोखा, दैट इज अ बजट ऑफ 1 ईयर, राइट? यहां पर भी वही है. ठीक है. पहले बजट दो तरीके के होते थे, रेलवे बजट एंड जनरल बजट. और ये आप देखोगे कि ऐसा नहीं कि ये बहुत पहले से था. ये बेसिकली ये था 1924 के बाद से. देयर वाज अ कमिटी. अब कमिटी नेम वाज Ackworth Committee 2000 that submitted a report in 2020, not 2000, 1921, and consequently 1924 budget has been divided into railway and general. But when this government, the current government we have, they came to power in 2014, they decided to merge the budget, and the budget has been merged in 2017. Now you have only one budget.
ठीक है, ठीक है। अब इस ये जो बजट है, अब बजट में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। एक है आर्टिकल 112, ठीक है। ये क्या कहता है कि द प्रेसिडेंट कॉजेज, the president shall causes to let down before both the houses the annual financial statement for each financial year. फिर एक है आर्टिकल 113, वो कहता है no demand for grants shall be made except the recommendation of the president. प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे तभी डिमांड फॉर ग्रांट्स इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। एक और है आर्टिकल 114, वो कहता है कि नो मनी शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम राइट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अप्रोप्रिएशन मेड बाय द लॉ। इस सारे प्रोविजंस हैं, ठीक है। उसके बाद और भी है कुछ प्रोविजंस, फॉर एग्जांपल नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, कौन सा आर्टिकल है? फिजिकल फेडरलिज्म में मैंने यहीं से शुरू किया था, याद है? नो या नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, आर्टिकल 260, नॉट 268, 265, 265। तो बहुत सारी प्रोविजंस है। एक और प्रोविजंस है कि पार्लियामेंट कैन नॉट रेज द टैक्स। पार्लियामेंट कैन basically reduce the tax, abolish the tax, but parliament cannot raise the tax. अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? Why parliament cannot raise the tax? Parliament cannot raise the tax. Why? Parliament can reduce it, parliament can abolish it, but parliament cannot increase the tax. क्या लॉजिक हो सकता है? राइट, लगने में तो लग रहा है कि भाई पार्लियामेंट को पावर होना चाहिए इंक्रीज द टैक्स, बट पार्लियामेंट मींस लेजिस्लेचर, राइट। जो टैक्स को इंक्रीज करने का जिम्मेदारी है वो एग्जीक्यूटिव के पास है, समझना है? अब पार्लियामेंट क्या करेगी? पार्लियामेंट कंट्रोल द लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ना। अब एग्जीक्यूटिव से नेगोशिएट करेगी, कट मोशन लगा देगी, है ना, राइट। उसको बोलेगी भाई टैक्स कम करो, या ये टैक्स नहीं चलेगा, टैक्स को हटाओ, राइट। वोट ही नहीं करेगी लोकसभा, जब वोट ही नहीं करेगी तो नहीं होगा, राइट। सो पार्लियामेंट हैज अथॉरिटी टू रिड्यूस द टैक्स, राइट, abolish the tax, but parliament cannot increase the tax. समझ में आया? कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जरा लिखिए तो, राइट अबाउट द बजट। देखिए, द टर्म बजट इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The term budget is not mentioned in the Indian Constitution. The term budget is not mentioned in the Indian Constitution. Okay, Article 112. Article 112. Article 112 deals with annual financial statement. Article 112 deals with annual financial statement. Which says that Article 112 deals with annual financial statement, which says that the president shall the president shall cause the president shall cause to be laid down the annual financial statement, to be laid down the annual financial statement of each of each financial year
before both the houses of the parliament. Before both the houses of the parliament. समझ में आया? Right, on the behalf of the president basically कौन इसको करता है? फाइनेंस मिनिस्टर. अच्छा, बजट बनाता कौन है? बजट तो बनाता भी होगा कोई, बनाता कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. ठीक है, देखिए, द बजट इज फ्रेम्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. कुछ इंफॉर्मेशन है. द बजट इज framed by the Department of Economic Affairs. It consists the estimated receipts, it consists the estimated receipts and estimated expenditure. What the idea? Now write article 113. No demand for grants. No demand for grants shall be made. No demand for grants shall be made. Except on the recommendation of the president. No demand of grants shall be made except on the recommendation of the president. Now write article 114. No money shall be withdrawn. No money shall be withdrawn from the Consolidated Fund of India. No money shall be withdrawn from the Consolidated Fund of India. No money shall be withdrawn from the Consolidated Fund of India except under the appropriation made by the law. Under the appropriation made by the law. Under the appropriation made by the law. एक और है आर्टिकल 117 का कंपोनेंट है. देखिए, no money bill shall be introduced. No money bill shall be introduced. No money bill shall be introduced in the parliament. In the parliament except on the recommendation of the president. Except on the recommendation of the parliament. Except recommendation made by the parliament. Okay, no such bill can be introduced in the Rajya Sabha. President. Parliament बोल दिया था क्या? President. Yeah, क्या लिखा? No money bill shall be introduced except the recommendation of the president of it. No such bill can be introduced in the Rajya Sabha. ऐसा बिल राज्य सभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा. Right? One more, article 265. Article 265. लिखिए, no tax shall be levied. No tax shall be levied or collected. No tax shall be levied or collected except by authority of law.
No tax shall be levied or collected except by the authority of law. One more point, next point you write. Okay. The parliament can reduce or abolish a tax. The parliament can reduce or abolish a tax but cannot increase it. But cannot increase it. But cannot increase it. समझ में आया? Parliament can reduce the tax, can abolish the tax, but cannot increase it. I told you that Parliament is a legislature. Legislature का काम नहीं है, एग्जीक्यूटिव का काम है इंक्रीज करना कि भाई कितना टैक्स होगा, राइट, बढ़ेगा घटेगा जो भी है, राइट, वो एग्जीक्यूटिव डिसाइड करती है. पार्लियामेंट क्या करता है? पार्लियामेंट उसको कंट्रोल करता है, राइट, उसको डिस्कस करता है, उसको बोलता है कि भाई कम करो, ये टैक्स बहुत है. सो पार्लियामेंट कैन डिक्रीज द टैक्स, पार्लियामेंट कैन एबॉलिश द टैक्स, इट कैन नॉट इंक्रीज द टैक्स. यस 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 यस, राइट. अब एक चीज और बता दूं कि जो बजट है उसमें एक्सपेंडिचर का दो कंपोनेंट होता है. एक होता है चार्ज्ड ऑन, द एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन, और दूसरा कंपोनेंट होता है द एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम, और एक्सपेंडिचर आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट. जो चार्ज्ड ऑन होता है ना, दैट इज नॉट वोटेबल पार्ट. व्हाट आइडिया? लेकिन द बजट, नेक्स्ट पॉइंट, द बजट कंसिस्ट two types of expenditure. The budget consists two types of expenditure, namely the expenditure charged on the consolidated fund of India, the expenditure charged on the consolidated fund of India, and the expenditure made from the consolidated fund of India, and the expenditure made from the consolidated fund of India. One more point you write. Okay, the expenditure charged on the consolidated fund of India is not votable part in the budget. The expenditure charged on the consolidated fund of India is not votable part in the budget. The expenditure charged on the consolidated fund of India is not votable part in the budget. However, the parliament can discuss it. 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 पार्लियामेंट इसको डिस्कस कर सकता है, ठीक है, उसमें वोट नहीं कर सकता, ठीक है. मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आई हैव डन. अब थोड़ा क्या है कि बजट में होता क्या क्या है. सो लुक एट द बजट, राइट, और वी कॉल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट. इसमें होता क्या क्या है, राइट. तो आप देखेंगे कि बजट स्पीच होता है, राइट, फिर इकोनॉमिक सर्वे भी होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स होता है, उसके बाद आप देखेंगे एप्रोप्रिएशन बिल होता है, फाइनेंशियल बिल होता है, राइट. उसके बाद एक और स्टेटमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट अंडर FRBM एक्ट. इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट. इसको 2003 में वाजपेयी जी ने पास किया था, एनडीए गवर्नमेंट ने पास किया था. अब इसका पर्पस था कि फिजिकल डिफिसिट को घटाना है, ठीक है, और साउंड फिजिकल पॉलिसी को अपनाना है, राइट. और इसके तहत कुछ स्टेटमेंट जो है ना वो भी लाए जाते हैं. ये सारा कंपोनेंट बजट का होता है. एक बजट में इतनी सारी चीजें होती है, ठीक है. अब उसके अलावा ये जो एक बजट का कंपोनेंट है,
उसके अलावा अब बोलोगे कि सर बजट पास कैसे होता है, तो बजट पास होने के पांच मतलब कुछ स्टेजेज है। पहला स्टेज होता है बजट प्रेजेंटेशन, ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुका है बजट, है ना, राइट। बजट जब जिस दिन प्रेजेंट होता है केवल उस दिन प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन आवर उस दिन नहीं होते हैं। उस दिन बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट बजट को पढ़ता है, राइट, या अभी तो पढ़ती हैं लोकसभा में भी, उसके बाद राज्यसभा में भी, और उसके कुछ दिन के बाद, ये पहला पहला स्टेज है, इंट्रोडक्शन। दूसरा स्टेज है कुछ दिनों तक डिस्कशन चलता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, डिपेंड्स ऑन, राइट। अपोजिशन उसको बुरा बुरा बोलता है, और जो पार्टी वाले हैं वो बोलते हैं वाह, इतिहास में कभी ऐसा बजट देखा नहीं, ये विकसित भारत को लाने वाला बजट है। हाँ, इस बजट में भारत, राइट, कोई नहीं छूटा, सब आ गए, हमारे किसान भाई, हमारे अनएम्प्लॉयड लोग, सबका इसमें बजट में है, इसमें कुछ ना कुछ, ये कॉमन चीजें हैं। अब होता है कि एक लास्ट में जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है वो सबको जवाब देती है, लास्ट में फाइनेंस मिनिस्टर सबको जवाब देती है, जो जो भी सवाल पूछता है कि भाई आपके लिए क्या है, आपने जो रेज किया है उसमें इस बजट में क्या है, बेसिकली। और उसके बाद क्या हो जाता है, वो पार्लियामेंट रिसेस में चला जाता है। कितने वीक के लिए डिपेंड करता है, 3 वीक 4 वीक, राइट। दो स्टेज हो गया, एक कौन सा, प्रेजेंटेशन, दूसरा कौन सा, डिस्कशन, जनरल डिस्कशन। अब तीसरा है जो स्क्रूटनी बाय द डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, जो अभी चल रहा है, अभी अभी खत्म हो गया। जो मीटिंग होने थे, सीटिंग होने थे, वो बंद हो गए, राइट। अब अभी क्या चल रहा है, अभी थर्ड स्टेज चल रहा है, स्क्रूटनी बाय द डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, राइट। 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी इंडिया में, कितना है टोटल, 24। वो क्या करते हैं, वो स्क्रूटनी करते हैं, राइट। स्क्रूटनी के बाद क्या होता है, स्क्रूटनी के बाद होता है डिमांड ऑन ग्रांट्स, बेसिकली, राइट। स्क्रूटनी के बाद होता है वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, जब ये 9 मार्च को खुलने वाले पार्लियामेंट, उसके बाद वोटिंग होगी, क्लॉज बाय क्लॉज, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग वैसे बजट प्रेजेंट होगा, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होगी, क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग होगी, ठीक है। दो चीजें बात है, वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये इट इज अ एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा में नहीं हो सकता, ये लोकसभा में होता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स प्रेजेंटेशन एंड पासिंग, राज्यसभा का पावर नहीं है इसमें। अब वोट भी किसके ऊपर होता है, वोट ऑन डिमांड, वोट ऑन जो होता है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम, जो वोटेबल पार्ट नहीं है बजट का उस पर वोट नहीं होगा, ठीक है। जब वोट हो गई, मैं आपको बता दिया कि भाई बुलेटिन बहुत यूज होता है, आप देखना इसी भी टाइम में कितना आएगा बुलेटिन वर्ड आएगा न्यूज़पेपर में कि भाई इतनी चीजों को बिना डिबेट किए हुए पास कर दिया, दैट इज कॉल्ड बुलेटिन, राइट। अब जब वोटिंग हो गई, उसके बाद पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन बिल को पास करते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स है कि नो मनी बिल कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट अप्रोप्रिएशन मेड बाय द लॉ, राइट। सो एक अप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस होता है, वो पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साइन करेंगे, और फिर मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जा सकता है डिपार्टमेंट। द नेक्स्ट स्टेज इज फाइनेंशियल बिल, राइट। जो फाइनेंशियल बिल है, राइट, वो लास्ट में पास होता है, राइट, और उसके पास होने के बाद ही बजट सेशन खत्म। मैंने जल्दी बता दिया, राइट। लेट मी गिव यू 10 मिनट्स ब्रेक एंड देन विल आई विल फॉलो द डिक्टेशन, ठीक है। क्या बजट, व्हाट बजट कंसिस्ट, एंड देन बट द बजट पासेस stages, how many stages it takes to pass a budget, ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है 10:41, 10:51, विल मीट, चलो मिलते 10 मिनट बाद। तो मैं जल्दी बोल गया, आई नीड टू डिक्टेट, यस। देखिए,
The budget consists the following. Budget consists the following. Budget consists the following. Budget speech, budget speech, annual financial statement. Budget consists the following. क्या लिखा? Budget speech, annual financial statement, annual financial statement, demands for grants, demands for grants, appropriation bill, financial bill, appropriation bill, financial bill, statement mandated under, a statement mandated under the fiscal responsibility, the fiscal responsibility and budget management act. Management Act 2003. 2003. ये सब मेजरली होते हैं. इकोनॉमिक सर्वे भी होता है, राइट? ये सब मेजर बजट का पार्ट होता है. अब लिखिए बजट पासिंग स्टेजेस और हाउ बजट इज पास्ड. How budget is passed. Okay. The budget passes through several stages. The budget passes through several stages. First, you write presentation of the budget. Second, called general discussion. Third, scrutiny by the department related standing committee. Departmental related standing committees. Fourth, voting on demands for grants. Fifth, passing of appropriation bill. Sixth, passing of financial bill. Passing of फाइनेंशियल बिल. ये इतना स्टेज होता है एक बजट पास होने के लिए. Now write first presentation of the budget. 6 स्टेज हो गया. हाँ, with the financial यहीं के बाद बजट खत्म हो जाता है. First you write presentation of the budget. Presentation of the budget. The finance minister presents the budget. The finance minister presents the budget on February 1st. On February 1st.
in the Lok Sabha, in the Lok Sabha, she gives budget speech, she gives budget speech in the Lok Sabha, she gives budget speech in the Lok Sabha and later presents the budget, later presents the budget before the Rajya Sabha, before the Rajya Sabha. ठीक है, that is the first day. इस बार आपने थोड़ा सा नोटिस किया क्या हुआ, बजट स्पीच ज्यादा देर नहीं होता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से राज्यसभा में होता है, उसके बाद फिर मीडिया ब्रीफिंग होती है, राइट 2 बजे 3 बजे तक मीडिया ब्रीफिंग होने लग जाती है, बहुत कम टाइम लगता है. और दिस डे इफ यू लुक एट 1 फरवरी देयर वाज अ संडे, राइट संडे को भी, बट संडे को हुआ, राइट. और ये 2017 के बाद इट इज अ न्यू ट्रेडिशन दैट 1 फरवरी वुड बी द यू नो बजट प्रेजेंटेशन डे. उससे पहले ऐसा नहीं था, थर्ड वीक था, right before 2017 third week, any day of the third week was the budget presentation day. Now it has been after 2017 first time is a date. Got the idea? Now right, second, general discussion, general discussion, general discussion. Okay. The next few days, members discuss the budget. The next few days, members discuss the budget in both houses of the parliament, in both houses of the parliament, and it generally continues for 5 days, and it generally continues for 5 days. At the end, the finance minister respond to each member. At the end, finance minister respond to each member or addresses the house, or addresses the house. ठीक है. Now third stage, you write scrutiny by the DRSC, scrutiny by DRSC, Department Related Standing Committee. लिखिए. After general discussion, the parliament is adjourned for 3-4 weeks. 3-4 weeks. In such period, there are 24 department related standing committee. There are 24 department related standing committee which examines the budget in detail,
and submit a report to the House. And submit a report to the House. And submit a report to the House. तो ये 3-4 वीक के लिए, 1 महीने के लिए, अभी कौन से तारीख को हुआ है, शायद कुछ ही दिन हुआ था, फ्राइडे को शायद पार्लियामेंट सस्पेंड हुआ है, मतलब ये हुआ है, एडजॉर्न हुआ है. अब ये खुलेगा 9 मार्च तक, राइट. अप्रोक्सीमेटली 3-4 वीक हो गया, राइट, 3 वीक्स. इतने दिन के लिए ये होता है. और उस बीच में क्या होता है, वी हैव 24 DRSC, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, व्हिच एग्जामिन्स द बजट इन डिटेल्स, राइट. सारा. और क्या करती है ये लोग, एक रिपोर्ट उस पे सबमिट करती है, ठीक है. अब ये रिपोर्ट मैंडेटरी नहीं है. लेट मी टेल यू, दैट रिपोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट. दैट रिपोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट. The government may take the independent decision, right. Now, right, voting on demand for grants. Voting on demand for grants. Voting on the demand of grants. In the context of submitted report, by the DRSC, the Lok Sabha takes up voting on demand for grants. Lok Sabha takes up voting on demand for grants. राइट. अब डिमांड फॉर ग्रांट्स को हम केवल डीजी कह सकते क्या, थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए प्रेजेंट करना, राइट. देखिए, द डीजी इज प्रेजेंटेड मिनिस्ट्री वाइज. द डीजी इज प्रेजेंटेड मिनिस्ट्री वाइज. द डीजी इज प्रेजेंटेड मिनिस्ट्री वाइज, and it becomes a grant when duly voted by the House. And it becomes grant when it is duly voted by the House. Okay. Two things are important here. Okay. First, the Lok Sabha has exclusive power on demand for grants. The Lok Sabha has exclusive power on DG. का मतलब है कि ये राज्यसभा में प्रेजेंट नहीं होता है, राइट. लोकसभा हैज एक्सक्लूसिव पावर ऑन डीजी. सेकंड, the voting is confined to the votable part of the budget. The voting is confined to the votable part of the budget. अब इसका मतलब क्या है कि only the expenditure made from the consolidated fund of India, right, वो वोटेबल पार्ट है, और चार्ज अपॉन जो है वो वोटेबल नहीं है, राइट. मिनिस्ट्री वाइज प्रेजेंट होता है, वोट होता है, जब वोट हो गई तो ग्रांट हो जाएगा, ठीक है. राइट. नेक्स्ट इज पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल. हैंग ऑन. यहां पर एक और चीज होता है. हैंग ऑन. यहां पर क्या होता है, जब वोटिंग होती है तो यहां पर तीन इंपॉर्टेंट थिंग होती है. दैट इज कॉल्ड कट मोशन. अलग अलग कट मोशन इंट्रोड्यूस हो सकता है. मोशन, राइट. मोशन इज समथिंग व्हिच इज डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, एंड व्हेन इट इज डिबेटेड एंड वोटेड इज कॉल्ड रिजोल्यूशन. यहां पर एक 3 तरह के कट मोशन इंट्रोड्यूस हो सकते हैं वोटिंग के समय पे.
एक है भाई, जो एक है दैट इज कॉल्ड पॉलिसी डिसअप्रूवल मोशन और पॉलिसी कट मोशन, ये समझना जरूरी है। पॉलिसी कट मोशन, जब वोटिंग हो रही होती है ना, तो एक वोटिंग मतलब एक कट मोशन इंट्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं पॉलिसी कट मोशन। इसमें यह कहा जाता है कि द एंटायर एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस टू द ₹1, राइट। जो पूरा डीजी आपने बना के दिया है, राइट, 40,000 50,000 करोड़ रुपए का, इसमें यह कहा जाता है कि दिस एंटायर डीजी शुड बी रिड्यूस टू ₹1। ₹1 में तो ट्रॉफी भी नहीं होता, डिपार्टमेंट क्या कर लेगा, राइट। बेसिकली इफ इट शुड नॉट बी पास, इट शुड नॉट बी पास्ड, right? And let me tell you, normally it is not in practice in Indian Parliament, but provision है हमारे पास, right? Policy cut motion क्या होता है? This modern motion says that the entire DG demand for grant should be reduced to ₹1। ठीक है, ठीक है। दूसरा होता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कट मोशन। इकोनॉमिक कट मोशन, अब इकोनॉमिक कट मोशन क्या होता है कि कहा जाता है कि भाई देयर शुड बी लम्प सम कट फ्रॉम द डीजी। मान लो कि 50,000 करोड़ का, राइट, डिमांड फॉर ग्रांट से मान लेते हैं, तो कहा जाता है कि भाई इसमें कि देयर शुड बी 20,000 करोड़ कट फ्रॉम द 50,000, राइट। अ लम्प सम अमाउंट शुड बी कट फ्रॉम द डीजी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक कट मोशन। ठीक है। तीसरा है टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन, अच्छा, टोकन कट मोशन क्या है? बेसिकली इसमें यह कहा जाता है कि द डिमांड फॉर ग्रांट शुड बी रिड्यूस्ड बाय ₹100। ₹100 में क्या कर लोगे, राइट? बट ये इसलिए इशू होता है कि द मिनिस्टर मस्ट टेक सम कंसर्न व्हाइल दे स्पेंड द मनी, राइट? इट इज वेरी मच सिंबॉलिक, it is very much symbolic. Got idea? So at this stage, voting on demand for grants, three cut motion can be introduced. Got idea? तो इसको छोड़ करके पहले इसको लिखना है। देखिए, at voting stage, at voting stage, at voting stage, members can introduce three types of cut motion. At voting stage, members can introduce three types of cut motion. First लिखिए policy cut motion, first you write policy cut motion. देखिए, it states that the DG shall be reduced to ₹1। The DG shall be reduced to ₹1। It is also called as policy. It is also called as policy disapproval motion. Policy disapproval motion. जनरली नहीं होता है, तीनों में से कोई यूज नहीं हो रहा है, बट ये प्रोविजन है कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, अगर ये पास हो गया मतलब सरकार का कॉन्फिडेंस नहीं है लोकसभा की। देखिए, एक ये बोलिए, इफ इट इज पास्ड, if it is passed, if it is passed in the Lok Sabha, it reflects that the government has no majority in the house. No majority in the house. Second, you write economic cut motion. Economic cut motion.
it states that it states that DG should be reduced by a specified amount. The DG should be reduced by a specified amount. For example, for example, the amount of the amount of 50 crore DG, 50,000 crore DG, the amount of 50,000 crore DG can be reduced by 20,000 crore. ठीक है? Now third, token cut motion. Token cut motion. It states that the amount of DG will be reduced by rupee 100. It states that the amount of DG will be reduced by rupee 100. The purpose of the token cut motion is to register grievances. The purpose of the token cut motion is to register grievances. Grievances. Register grievances. कुछ ग्रीवांस है तो टोकन कट मोशन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है. So all three cut motion is introduced at the voting time. ठीक है? Now write of the appropriation bill. Passing of the appropriation bill. Right? Okay. According to Article 114. According to Article 114. No money shall be withdrawn from the Consolidated Fund of India. According to Article 114, no money shall be withdrawn from the Consolidated Fund of India except under appropriation made by the law. Except appropriation under appropriation made by the law. ये constitutional provision है, right? देखिए, accordingly, appropriation bill is introduced and passed by the parliament. Accordingly, appropriation bill is introduced. Accordingly, appropriation bill is introduced and passed by the parliament. When the president gives assent to the appropriation bill, when the president gives assent to the appropriation bill, the department can withdraw the money from the Consolidated Fund of India. ठीक है? Now write passing of the financial bill.
पासिंग ऑफ द फाइनेंशियल बिल। अच्छा, मैंने आपको फाइनेंशियल बिल बताया है। कौन कौन सा फाइनेंशियल बिल है? मनी बिल भी है, फाइनेंशियल बिल 1 भी है, फाइनेंशियल बिल 2 भी है। ऑल फाइनेंशियल बिल इज पास्ड, all financial bill is passed in the last stage, in the last stage, and the budget session comes to an end. All financial bill are passed, and all financial bills are passed, and the budget session comes to an end. All financial bills are passed, and the budget session comes to an end. यहाँ के बाद बजट सेशन खत्म हो जाता है। गॉट आइडिया? अच्छा, फंड के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इसलिए पढ़ा दिया है कि यहाँ पर दिक्कत ना हो। ठीक है। नाउ पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमिटीज कोई दिक्कत हो कल भी पूछ लेना, बजट घर पे पढ़ना आज जैसे अच्छे से। इफ एनी इफ यू एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क रेज क्वेश्चन टुमारो। ठीक है, घर पे पढ़िएगा अच्छे से सारे आर्टिकल को। लेट मी टॉक अबाउट पार्लियामेंट्री कमिटी। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया हुआ है, राइट? भाई पार्लियामेंट्री कमिटी क्या है? पार्लियामेंट इज पार्लियामेंट हैज अ बिग वर्क, a very large volume of work, right? तो अब ये काम कैसे करेंगे? कोई भी बड़ा काम हो तो क्या करते हैं हम लोग? हम क्या करते हैं, काम को टुकड़ों में बांट देते हैं, राइट? और उस काम को टुकड़ों में फिर हम जितने भी लोग हैं वो भी आपस में बांट लेते हैं कि भाई ये ग्रुप ये करेगा, ये ग्रुप ये करेगा, ये ग्रुप ये करेगा, ये ग्रुप ये करेगा। इसी तरह काम होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है कि पार्लियामेंट में छोटे छोटे मतलब ग्रुप बना के दिए गए, राइट? 22 लोगों का, 31 लोगों का, 25 लोगों का, राइट? ठीक है। तो बेसिकली और उनको काम दिया गया है कि ये आप काम करेंगे। सो पार्लियामेंट्री कमिटी इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ MPs, right, assigned to certain tasks. अगर सिंपल मतलब निकालेंगे, इट इज अ ग्रुप ऑफ MPs assigned for right certain task, right? अब पार्लियामेंट्री कमेटी में देखोगे कि दो तरह के कमेटी होते हैं। एक होता है स्टैंडिंग कमेटी, और दूसरा होता है एडहॉक कमेटी। एडहॉक मतलब ही होता है भाई टेम्पररी, ठीक है? एडहॉक टीचर है ना, एडहॉक लॉयर, एडहॉक, इट इज ए टेम्पररी बेसिकली, राइट? जब कमिटी बनेगी काम हो जाएगा, committee will be dissolved automatically. Let me give you example. During COVID-19, there was an ad hoc committee. The parliament set a ad hoc committee, right? For the how this entire COVID-19 shall be managed. COVID-19 खत्म हो गया, ये कमिटी अपने आप डिसॉल्व हो गई। ये है हमारे पास स्टैंडिंग कमिटी, दैट इज बेसिकली परमानेंट कमिटी, राइट? अब स्टैंडिंग कमिटी भी बहुत तरीके की होती है। एक होता है फाइनेंशियल कमिटी। फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस से लेना देना जिसको हो, दैट इज फाइनेंशियल, राइट? अब यहाँ पर तीन कमिटी है जो इसको फाइनेंस से लेना देना होता है, राइट? एक है उसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमिटी, सबसे पुरानी कमिटी है जिसको मदर ऑफ ऑल कमिटी भी कहा जाता है, पब्लिक अकाउंट कमिटी को, राइट?
ये 100 साल से ज्यादा ऊपर हो गया इसका, ठीक है, 1921 में पहली बार आया था। और दूसरा है, इसको बोलते हैं एस्टिमेट कमिटी, राइट। और जो तीसरा है, तीसरे को बोलते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो पब्लिक सरकार चला रही है, राइट, उसके लिए एक कमिटी होती है। शादियों में हम क्या करते हैं, बड़ा सा काम होता है तो कम छोटा छोटा बांट देते हैं सारा काम, राइट। उसी तरह यहाँ पर काम बांट दिया गया, फाइनेंस से रिलेटेड काम इन लोगों को दिया गया, पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टिमेट कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसके अलावा इफ यू लुक एट कमिटी, देयर इज अ कॉल्ड डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी। और ये नया पुराना नहीं है, मतलब नया है स्टैंडिंग कमिटी, राइट। सेवन 17 अराउंड बना था 1993 में, और फिर बाद में और बना है। यू हैव 24 कमिटी ऑल टुगेदर, सच कमिटी, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि और भी है, फॉर एग्जाम्पल कमिटी टू इंक्वायर भी है, कमिटी टू इंक्वायर। अच्छा, कमिटी टू इंक्वायर मतलब क्या है, एग्जामिनेशन करना, राइट। इसमें जो कमिटी आती है, देयर आर सेवरल कमिटी फॉर इंक्वायरी, देयर आर 3 कमिटी टू इंक्वायर, वन इज कॉल्ड कमिटी ऑन पेटिशन, इसमें 3 कमिटी है, कमिटी ऑन पेटिशन, और आप बना भी लेंगे, लिखते भी रहेंगे, कमिटी ऑन पेटिशन, फिर कमिटी ऑन प्रिविलेज, ऑन प्रिविलेज, और तीसरा है एथिक्स कमिटी, राइट। उसके बाद एक है कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, यहां पर दिक्कत हो पूछ लेना, तो ये क्या है, कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। नाउ देर आर सिक्स सच कमिटी, लेट मी टेल यू, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, ठीक है, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। उसके बाद कमिटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल, then committee on welfare of SC/ST, then committee on empowerment of women, right? Then joint committee on office of profit, ज्वाइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद अलावा और कमिटी है भी है, राइट, जैसे कि लाइब्रेरी कमिटी है, बहुत सारे कमिटी होते हैं।
If you find any issue, just let me know. बेसिकली जो ये है फाइनेंशियल कमिटी विद डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, कमिटी टू इंक्वायर में एथिक्स कमिटी भी लिम्स में आ सकता है। ये कमिटी है लिम्स में पूछने लायक कि इसका काम क्या है, ठीक है, और नाम से पता चल जाता है कमिटी। जैसे फॉर एग्जांपल कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ एस सी एस टी, भाई उससे वेलफेयर के बारे में स्क्रूटनाइज करेगा, रिकमेंड करेगा। कमिटी ऑन एम्पावरमेंट वुमेन, वुमेन के बारे में बात करेगा। These are the list of the parliamentary committee we have. All नहीं है but majority of this ये है। सारे इसी के अंदर है, राइट। ये जो 6 है ना, कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, उसी के अंदर 6 ऑल 6 है। अंदर नहीं, टाइपोलॉजी कही कि टाइप है, राइट, जो स्क्रूटनी एंड कंट्रोल करता है, तो ये 6 है। फाइनेंस के पे जो बात करता है, राइट, अ कमिटी व्हिच एक्चुअली टॉक्स अबाउट द फाइनेंस, स्क्रूटनाइज द फाइनेंस 3, there are 24 department related standing committee. Then committee which inquired basically, right, committee on privilege, committee on ethics. अभी राहुल गांधी पे कमिटी ऑन प्रिविलेज बैठने वाला था, राइट, ठीक है। अच्छा, कमिटी ऑन प्रिविलेज कब बैठता है, बेसिकली कौन बातें सुनता है, क्या किस तरह की बातें सुनता है? You know, being member of the parliament, there is a privileges. If any member basically breaks that privilege, then committee sits. अब एथिक्स कमिटी क्या होती है? एथिक्स कमिटी होती है टू मेंटेन द एथिक्स। अब एथिकल ड्यूटी क्या है? मान लो कि किसी भी एमपी को बाहर जाना है और उसने क्या किया कि भाई मुझे जाना है फैमिली के साथ, मेरे बच्चे और मेरी जो वाइफ है उसका भी टिकट बना दो। अब करते क्या ये एमपी? अपनी वाइफ को घर में छोड़ देते, किसी पार्टनर को साथ करते कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं, राइट, और उसके साथ जाते हैं। दैट इज एथिकल, अनएथिकल कंडक्ट, राइट। उस केस में कौन सुनता है? एथिक्स कमिटी, ठीक है। ऐसा हुआ है, लेट मी टेल यू, और ऐसा होता है कि अपना वाइफ के नाम पे टिकट लेते हैं और किसी और के साथ जाते हैं घूमने के लिए। डन। Yes, online students, have you done the listing part? Sanskriti, Shelly, Tamanna, Mushkan, Deepika, everyone? Done? अमन, मैंने बहुत बाद में देखा आपका लाइन। कैन यू हेल्प मी so that I can repeat the where you missed? You done? Okay, that's great. Now let me talk about public account one by one committee, right? ठीक है, public account committee. अभी पार्लियामेंट ने 100th एनिवर्सरी मनाया है इसका, अभी मतलब हो गया 4-5 साल हो गया 100th एनिवर्सरी मनाने का। This committee came up in 1921 on the recommendation of the government of India Act 1919, and जो public account committee है basically it has 22 members, ठीक है, 15 from the Lok Sabha and 7 from the
राज्यसभा. If you look at the election, members of this committee are basically elected, right? जो member लोकसभा से होंगे लोकसभा से elect होंगे, जो राज्यसभा से होंगे वो राज्यसभा से elect होंगे, right? On the basis of PRSTV, so that from each party members can be elected. ठीक है? PRSTV में क्या होता है? Each party get representation. अगर आप टेन्यर पूछोगे सर टेन्यर कितना होता है, तो टेन्यर होता है 1 साल. हर साल टेन्यर बदलता है इनका. हर साल ये पब्लिक अकाउंट कमेटी बनती है हर साल. ठीक है, तो 1 ईयर टेन्यर होता है. इसके जो चीफ होते हैं चेयरपर्सन, बेसिकली चेयरपर्सन इज बेसिकली नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर. ठीक है, उसके बाद काम क्या होता है, इसका काम होता है कैग जो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है ना, मोटा मोटी बता रहा हूं, कैग जो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है उसको एग्जामिन करना, ये बेसिक काम होता है. राइट, सो राइट द कंपोजिशन, या पहले ओरिजिन लिख लीजिए. ओरिजिन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, and it is in existence since 1921. That is the origin. Now write composition. Composition, 22 members. Members, 15 from the Lok Sabha and 7 from the Rajya Sabha. ये कंपोजिशन है. देखिए इलेक्शन, members are elected by the parliament every year. Members are elected by the parliament every year from amongst its members. From amongst its members according to PRSTV. According to PRSTV. Hence, all parties get due representation in it. Hence, all parties get representation in it. Hence, all parties get representation in it. हो गया, राइट? टेन्यर लिखिए. टेन्यर 1 year. टेन्यर 1 year. राइट, अब लिखिए चेयरपर्सन. देखिए अपॉइंटेड बाय द स्पीकर, from amongst its member. मेंबर्स, ये जो 22 लोग इलेक्ट हुए हैं ना, राइट, इसमें से जो स्पीकर है ना वो क्या करेंगे, उसके चेयरपर्सन को डिसाइड करेंगे. नाउ वन मोर पॉइंट, इफ यू लुक एट 1966 तक क्या हुआ है, 66-67 तक इसके चेयरपर्सन जो है वो रूलिंग पार्टी से हुई है. बट उसके बाद एक कन्वेंशन डेवलप किया गया कि इसके जो चीफ होंगे ना नॉमिनेट, वो अपोजिशन पार्टी से होंगे. ठीक है, लिखिए, राइट इट.
देखिए until 1966-67, until 1966-67, the chairman of the committee belongs to the ruling party. The chairman of the committee belongs to the ruling party. Since 1967, since 1967, the chairman of the PSC, the chairman of the PSC goes to the opposition party. जरा अभी चेक करो कौन है. Look at the, जरा देखिए तो अभी कौन है पीएससी का चीफ इस साल का. हर साल बदलता है ऑफ कोर्स, और नहीं भी बदल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. बट अभी अपोजिशन में वाले हैं या रूल वाले हैं, रूलिंग पार्टी वाले हैं. शिव बनगोपाल अपोजिशन पार्टी के हैं, राइट. एक चीज और है, मिनिस्टर कैनॉट बी द मेंबर ऑफ द, कैनॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द पीएससी. लिख लीजिए तो इसको. देखिए, अ मिनिस्टर कैनॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी. A minister cannot be elected as a member of the public account committee. ठीक है. अब काम क्या है इसका, लिखिए वर्क एंड फंक्शन. वर्क एंड फंक्शन एक लाइन में लिखिए, उसके बाद डिटेल्स में करेंगे हम लोग. देखिए, द की फंक्शन ऑफ द की फंक्शन ऑफ द कमिटी, the key function of the committee is to examine the annual audit report of the CAG. The key function of the committee is to examine the annual report of the CAG. Of the CAG. ठीक है. अब देखो कि क्या है कि जो कैग है ना, वो कैग सबमिट रिपोर्ट किसको करेगा, किसको करेगा, प्रेसिडेंट को. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, वो रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, वो प्रेसिडेंट को करेगा. अब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट लेट डाउन द दैट रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट, और उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको स्क्रूटनाइज करती है. ठीक है. तो हमेशा याद रखना कि कोई भी जो कमेटी है ना, स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है प्रेसिडेंट को. ठीक है. प्रेसिडेंट मतलब गवर्नमेंट को. ठीक है. बट जब आपको पूछा जाएगा तो गवर्नमेंट अलग चीज है, प्रेसिडेंट अलग चीज है, राइट. सो प्रेसिडेंट को वो करते, प्रेसिडेंट लेट डाउन दैट रिपोर्ट टू द हाउस, एंड देन पब्लिक अकाउंट कमिटी स्क्रूटनाइजेस द एनुअल टैग रिपोर्ट. ठीक है. पॉइंट चेंज करिए, लिखिए द कैग सबमिट्स 3 audit reports to the president. The CAG submits 3 audit reports to the president. First, audit report on appropriation account. Audit report on appropriation account. Second, audit report on finance accounts.
audit reports on finance accounts, and third, audit report on public undertaking. And audit report on public undertaking. Right? Next point to write, PSC, Public Account Committee, examines the Public Account Committee examines the appropriation account, the appropriation accounts, and the finance accounts of the union government. The PSC examines the appropriation accounts and finance accounts of the union government and any other accounts laid before the Lok Sabha. Okay. It examines, next point, it examines the account of a state corporation, trading concerns, and manufacturing projects. Okay, except those which are undertaken by the Committee on Public Undertaking. Except those which are undertaken by the Committee on Public Undertaking. बहुत सारे को इनको दिया गया, थर्ड वाले को दिया गया, तो वो काम वो नहीं करेंगे, अदरवाइज सारा काम वही करेंगे, पब्लिक अकाउंट कमेटी ही करेगी, राइट? जो पार्ट इनको दिया गया है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को, वो पब्लिक अंडरटेकिंग करेगी, रेस्ट कौन करेगा? पब्लिक अकाउंट कमेटी करेगी, राइट? नेक्स्ट पॉइंट यू राइट, देखिए, PSC examines tag report not only PSC examines CAG report not only from the legal perspective, but also on the basis of financial prudence. ठीक है, तो ये काम कौन करती है? कैग करती है, बट इसका कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है? राइट, बहुत सारे लिमिटेशंस है कैग कमेटी का। फर्स्ट लिमिटेशन है कि कैग जो भी रिकमेंडेशन देगी दैट वुड बी नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, राइट? और ये क्या करता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट बनाता है, यानी सारा काम हो जाता है पिछले साल का, ठीक है, और तब जाकर के एग्जामिन करती है, राइट? और उसके ऊपर वो रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को, व्हेन दैट रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग, राइट? सेकेंडली, इफ यू लुक एट पब्लिक अकाउंट कमेटी जो काम करती है, कितने लोग हैं इसमें? 22 लोग, राइट? सरकार का कितना बड़ा अकाउंट है, it does not seem they are very few in number, right? और मैं एक चीज और बता देता हूं कि वो एग्जामिन करने में कैग के लोग उनको सपोर्ट करते हैं, राइट? कैग इज कॉल्ड एज अ बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द कमिटी, बेस्ट फ्रेंड्स, गाइड्स टू द कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी। तीसरा है, इफ यू लुक एट द टेन्योर इज मेयर ओनली वन ईयर, ठीक है? जब तक कुछ एक्सपीरियंस होगा तब तक चीजें आ जाएंगी, राइट? एंड देयर इज नो प्रोविजन दैट एक्सपर्टीज, राइट? अगर कोई मान लो कि सीए एमपी है, वो सीए है, राइट? तो उसको भी इसमें लाया जाए। Some expertise should be brought in the public account committee so that they can investigate or examine
the annual report submitted by the CAT. Got the idea? So how, क्या सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट है भाई, ब्यूरोक्रेट एक ब्यूरोक्रेट दूसरे ब्यूरोक्रेट की बात बताएगा क्या? चोर चोर नहीं सुना है? अब ये बताओ, आप देखोगे कि क्या एक ब्यूरोक्रेट दूसरे ब्यूरोक्रेट की बातें ओपन करता है? नहीं करता है। उसके अंदर जितनी फ्रैटर्निटी है, ठीक है, चोरी कैसे हो जाती है? फ्रैटर्निटी से बहुत चोरी हो जाती है। आप बताएगा ही नहीं। सेक्रेटरी है, वो एक्सपर्टीज है, कैग के भी जो लोग एक्सपर्टीज होते हैं वो, राइट, वो बताएगा, एक दूसरे को नहीं बताएगा। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई जो ये कमिटी ने, इसका काम है एग्जामिन करना, और एग्जामिन से क्या होता है? इट एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट, right? Through the examining of the CAG report, it actually ensures accountability, transparency, right, effectiveness of the government, right? However, there are limitations. Anyway, कुछ लिखा आपने? नहीं लिखा? एक लाइन लिख लीजिए। by examining CAG reports, the PSC ensures accountability, transparency, and effectiveness of the government. Next point लिखिए जरा। however, public account committee has several limitations. Public account committee has several limitations. अब लिखिए पहला, दूसरा, तीसरा। फर्स्ट लिखिए, it has no constitutional status. It has no constitutional status or autonomy. Second, it does post-mortem examination of the account. It does post-mortem examination of the account. Next, it lacks expertise. Next, it cannot intervene in the matter of day-to-day administration. It cannot intervene in the matter of day-to-day administration. Next, the recommendation of the PSC is not binding on the government. The recommendation of the PSC is not binding on the government. The recommendation of the PSC is not binding on the government. ठीक है। अब वे फॉरवर्ड क्या होगा? बेसिकली ये डिबेट जब हुआ था 1921 के लास्ट में, दिसंबर में, पूरे एक दिन का ये हुआ था। बेसिकली मीटिंग हुई थी क्योंकि 100th एनिवर्सरी हुआ था, तो उस दिन ये बहुत सारी बातें हुई थी कि भाई कैसे हम पब्लिक अकाउंट कमेटी को सुधार पाए। दैट डिबेट वाज विद इन द पार्लियामेंट, राइट? ठीक है, लिखिए वे फॉरवर्ड। The government should give constitutional status to the PSC. The government should give constitutional status to the PSC.
so that it can work autonomously. The government should give constitutional status to the PSC so that it can work autonomously. Second, its tenure should be extended from 1 year to 5 years. Its tenure should be extended from 1 year to 5 years. Next, the strength of the PSC should be increased. The strength of the PSC should be increased. The strength of the PSC should be increased. अब कितना इंक्रीज होना है वो एक्सपर्टीज का काम है, राइट? हम नहीं कह सकते कि भाई 22 के अलावा 25 कर दो या 30 कर दो. Now one more point, look at, we talked about it lacks expertise. Now how expertise? आपको बताया कि इसका क्या होता है, इलेक्शन होता है, राइट? ऐसा नहीं हो सकता कि यू नो देयर कुड बी आल्सो 1 or 2 member nomination, right, by the president, of course, by the president, and especially of the nomination of the person who have expertise on the this field, nahi, so that they can look the CAG report effectively. लिखिए जरा next. देखिए, there should be nomination of at least 2 members. There should be nomination of at least 2 members of the PSC by the president, by the president, by the president, from the field of from the field of expertise related to CAG works, related to CAG works. इलेक्शन से तो पॉसिबल ही है कि नहीं आ सकता है, ये भी पॉसिबल है, राइट? तो वहां पर क्या है, नॉमिनेशन कर दीजिए आप 2 लोगों का, राइट, ताकि ये पब्लिक अकाउंट कमिटी सही से काम कर सके. So these are the basically way forward, and now this way forward basically discussed in that debate also, right? PSC is also called as mother of all parliamentary committee, right? So with this we'll end. मैंने सोचा था बजट तक पढ़ा दूं मैं, but I have finished one parliamentary committee today. We'll discuss next parliamentary committee tomorrow. पार्लियामेंट्री कमेटी से क्लिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं, ठीक है? सो अच्छे से पढ़िए इसको. सवाल है कुछ, यू मोस्ट वेलकम. यस, तमन्ना, शरिता, संस्कृति, मुस्कान, दीपिका, अमन, if you have any query, we have 4 minutes. 2 minutes. आंखें खराब हो गई. समझ में आया, राइट? So we'll see you tomorrow, ठीक है? I'm stopping here, everyone. See you tomorrow.